My lovely students, welcome to Mathological. In this video, we're doing some good questions from Quantitative section for XAT examination. Start करते हैं चैनल को. And if you're not already subscribed to the channel, then make sure to subscribe to the channel और साथ में also press the bell icon. You can also join Telegram channel. अच्छा थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा होगा बट दैट इज काइंड ऑफ अनअवॉइडेबल क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो थोड़ा सा बियर करना उसको. चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को एंड लेट अस टेक फर्स्ट क्वेश्चन. In Churra village, a total of 6,000 registered voters had cast their votes. 70% of the total registered male voters and 45% of total registered female voters had voted. If total registered male voters are 2,000 more than total registered female voters, then find total number of registered voters in the Churra village. Total 6,000 voters have voted, and 70% of the registered male voters and 45% of registered female voters have voted. So if there are m male voters and f female voters, then we can say that m minus f, since there are 2,000 more male voters registered, so m minus f, this is equal to 2,000. First equation. And 70% of the male voters, which is 0.7 times m, plus 45% of female voters, which is 0.45 times f, this is equal to 6,000, because total 6,000 have voted. This is our second equation. Now if we need to solve these equations, दो unknown है, दो equations है, तो multiply the second equation by if we multiply by 10, so this becomes 7m plus 4.5f, so multiply by 20. So this equation becomes 14m plus 9f, and this is equal to 120,000. Now if you multiply first equation by 9, this will become 9m minus 9f is equal to 18,000. So if we add these two, 9f and 9f will get cancelled out. So 23m will be equal to 138,000. And hence m will be equal to 23 से cancel out करेंगे 6,000. m is equal to 6,000. And since m minus f was equal to 2,000, f will be equal to 4,000. m is 6,000, f is equal to 4,000. Total number of registered voters will be 6 plus 4, 10,000. Option C. Straight away, easy question. Okay. Clear? आगे बढ़ते हैं. Next question. Speed of a car is s km per hour and speed of the bus is twice that of speed of the car. So car का speed, if that is given as s km per hour, then since speed of bus is double that, so that will be 2s km per hour. And car starts from point A at 10 a.m. and reaches point B at 5 p.m. So time taken by car from point A to point B, that is 7 hours. So time taken by car to travel the distance AB, that is equal to 7 hours. While bus starts from point A to reach point B and it covers distance of 240 plus 2s km in 3 hours. The bus is covering a distance of 240 plus 2s km in 3 hours and speed of the bus is 2s. So distance traveled by bus in 3 hours will be 3 into 2s, यानी कि 6s, and that is equal to 240 plus 2s. 6s is equal to 240 plus 2s, which implies that 4s is equal to 240 or s is equal to 60. And hence speed of the car is 60 and speed of the bus, that is equal to 120. Okay. Straight away भी देख सकते थे कि since speed of the bus is 2s, तो distance traveled by bus in 1 hour will be 2s only. और हमें given है 3 hours का distance, that is 240 plus 2s. So if bus is covering 2s distance in 1 hour, so this 240 must be distance traveled in 2 hours. So we know कि speed of the bus will be 240 by 2, which is 120 km per hour, and speed of the car will be half of that, which is 60. Then question is saying that if we are increasing the speed of the bus, speed of the bus is being decreased by 25%. So we are decreasing the speed of the bus by 25%, which will be 1 by 4. यानी कि we are decreasing the speed of the bus by 30. 120 minus 30, यानी कि 90 km per hour will be speed of the bus, and speed of the car is increased by 25%. So 60 plus 25%, and 1/4, 60 plus 15, 75 will be speed of the car, and 190 will be speed of the bus. Then find the difference in the time taken by bus and car in traveling a distance of 180 kilometers. So time taken by car will be equal to 180 upon 75, which will be 2 and 30 by 75 and 2 and 2 by 5. And time taken by bus will be equal to 180 by 90, which is equal to 2 hours. So difference between the times will be 2 by 5 hours, which will be equal to 2 by 5 into 60,
and hence 120 by 5, 24 minutes. Option C. Okay, clear. Next question. A dishonest seller buys rice from a wholesaler using a faulty balance that measures 1200 grams for every 1000 grams he pays for. He marks up the price by P% of the cost price. While selling, he uses a balance that reads 1000 grams for every 900 grams actually sold. Additionally, he offers a buy 5 get 1 free scheme. Despite this discount scheme, his overall profit percentage is 44%. So what is the integer value closest to P? So dishonest seller is purchasing rice from a wholesaler using a faulty balance, and that faulty balance measures 1200 grams for every 1000 grams he pays for. Okay. So basically he is paying for only 1000 grams and he is getting 1200 grams. So that is the profit. So 1000 he is paying for and 1200 he is getting. So effectively ratio क्या है CPSP का effect on ratio of CPS to SP 10,000 is to 1000 is to 1200 or 10 is to 12. That is the ratio. Secondly, he marks up the price by P%. While selling, he uses a balance that reads 1000 grams for every 900 grams that he is actually selling. So he's selling only 900 grams, but he is getting money for 1000 grams. So effectively, the effect will be 9:10 due to this. And additionally, he offers a buy 5 get 1 free scheme. And he is giving 6 items when someone is purchasing 5 items. Buy 5 get 6 get 1 free scheme. So if you are purchasing a 5 kg for example, तो 1 kg will be given extra for free. Isn't it so? So that is addition. अब इसकी वजह से उसका फायदा होगा लॉस होगा डेफिनेटली लॉस होगा because he is giving 1 extra item for free. So effectively if he is giving 6 items, he is taking price for only 5. 6:5 का रेशियो आएगा and ultimately क्योंकि he is also marking up. मार्कअप क्या कितना है पता नहीं है. Let us say 100 is the cost price and 100 plus P, that P is the markup, so 100 plus P. These will be all effects, all factors, and effectively he is getting a profit of 44%. So if 100 rupees is the cost, तो 144 will be the selling price that he will be taking. अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो 10 to 12 6 to 5 तो 12 10 into 6 60 12 into 5 60 so these will get cancelled out on both sides. फिर इस 10 से यहाँ पे एक 0 कैंसिल आउट हो जाएगा तो इफेक्टिवली 10 upon 100 plus P. This becomes equal to 100 upon 144. Cross multiply. So 10,000 plus 100 P is equal to 1440. एक सेकंड 1440 एंड ठीक किया है हमने. ये 9 भी तो रह गया था ना 90 आ जाएगा 9 भी तो रह गया है और ये 0 कैंसिल कर सकते हैं. सो 9 into 144 1000 plus 10p is equal to 9 into 144. So 1440 minus 144 to 1296 and hence 10p is equal to 296. So p will be equal to 29.6 which is approximately 30%. Option B will be the answer. Okay, clear है. ठीक है आगे बढ़ते हैं. अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी सॉल्व कर सकते थे कि यही सेम चीज़ जो रेशियो में मेंशन किया है इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर में लिख लेते हैं या अल्टीमेटली कह देते हैं कि लेट अस से यहाँ पे वैल्यूज होंगी एज टू बी. बात वही. ओके कि फॉर ड्यू टू फर्स्ट ट्रांजैक्शन ही इज purchasing rice 1200 grams he is getting and he is only paying for 1000 grams. So effectively the effect on CP and SP, the SP by CP or multiplying factor will be 1200 by 1000 or 6 by 5. Now that multiplied by, he is marking up the price by P%. Let us say for that multiplying factor will be F. Multiplied by, he uses a balance that reads 1000 grams for every 900 grams, so 10 by 9. And that multiplied by, he is offering buy 5 get 1 free. So if someone is purchasing 5 items, he is giving 6 items. So effectively the multiplying factor for this will be 5 by 6. And the net effect is ultimately a profit of 44%. Yani 144 by 100 or this will be 36 by 25.
Now 6 and 6 will be getting cancelled out, 5 and 5 will be getting cancelled out, and this is f into 10 by 9 is equal to 36 by 25. F is equal to 36 into 9, 324 by 250, which is effectively 1 plus 74 upon 250. And this is roughly 30%. And hence answer will be 30% only. Okay. Clear here. Next question. The time taken by A to complete a work is 50 days. B takes X% more days than A and C takes X% more days than B. The time taken by C to complete the work is 38 days less than the sum of the time taken by A and B individually if C started the work alone and continued for 6 days and the remaining work was completed by A and B together in M days, then find the value of M. What will be value of M? So time taken by A to complete the work is 50 days. That is known. Time taken by B is X% more than A. If A is taking 50 days, B will be taking 50 into 1 plus X by 100 days. And then further, C takes X% more days than B. So time taken by C will be 50 into 1 plus X by 100 multiplied by this value multiplied by 1 plus X by 100. Or we can write it as 50 into 1 plus X by 100 whole squared. Again, XAT लिख सकते हैं. That will be 50 into 1 plus X by 100 whole squared. Okay. और simplify करने के लिए we can assume that let us say कि 1 plus X by 100 this is equal to some value P. So time taken by B will be 50 into P and time taken by C will be 50 into P square. Now we know that time taken by C to complete the work is 38 days less than sum of time taken by A and B individually. So time taken by C यानी 50P square is basically 50P plus 50 minus 38. This will be our equation. अब ये quadratic form हो गया, solve कर लेंगे. 50P square is equal to 50P plus 12 और divide by 2 तो 25P square minus 25P minus 6 this is equal to 0. 25 into 6 is 150. तो product is minus 150 and sum is 25. ठीक है, प्रोडक्ट आ रहा है हमारा, एक सेकेंड है, 25, ठीक है ना, 50P स्क्वायर माइनस 50P माइनस 12, हाँ ठीक है. सो प्रोडक्ट हमारा आ रहा है इक्वल टू माइनस 150 और सम आ रहा है 25. तो क्या वैल्यूज पॉसिबल है? दिस कुड बी 30 एंड 5 एंड सिंस आवर प्रोडक्ट इज माइनस 150 सम इज 25 तो प्लस 30 एंड माइनस 5 विल बी द वैल्यूज. नॉट डिवाइड बाई 25. दीज विल बी आर रूट्स ऑफ द वैल्यू P. So P can be plus 30 by 25 or it can be minus 5 by 25. Okay. Now since B is taking X% more days, so X has to be positive. And if X is positive, then definitely P will be greater than 1. Isn't it so? P negative तो हो नहीं सकता. So this is not possible. This should be the value plus 30 by 25 which is equal to 6 by 5. So P is equal to 6 upon 5 which is basically 1 plus 20%. 1 plus 1 by 5, 1 plus 20%. So X is equal to 20% आ गया यहाँ से. Okay, and if X is 20%, yeah, 1 plus X by 100 or P is equal to 6 by 5, so time taken by B will be 50 into 6 by 5 which is equal to 60 and time taken by C will be 60 into 6 by 5, that is 360 by 5 which is equal to 72. Time taken by A is 50, time taken by B is 60 and time taken by C is equal to 72. अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू है इफेक्टिवली 50, 60 and 72. फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है C started the work alone and continued for 6 days, then remaining work is completed by A and B in M days, to find value of M. Now we can take LCM of 50, 60 and 72. So 50, 60 and 72. So 50 is 25. So 25 into 12 into 6. 25 into 12. So yes, A and B are adjusted and C is basically 12 भी आ गया. तो 25 into 12 into 6. This will be our LCM. This will be the LCM. This is total work. Efficiency of A will be this divided by 50, so that will be 36. Efficiency of B will be this divided by 60, so 12 into 5, 5 into 6, 30. And efficiency of C will be 25. Okay, time taken was 6 by 5, the efficiency will be 5 by 6. So directly 5 by 6 करते तो 36 into 5 by 6, 30. 30 into 5 by 6, that is 25. Okay, अब फिर हमें given है कि C has worked for 6 days only. So work done by C in 6 days will be 25 into 6. Remaining work will be done by A and B. So 25 into 12 into 6 minus 25 into 6. This will be the remaining work and this is done by A and B, that is 36 plus 6. 36 plus 30. Now 25 into 6 को common ले लो.
So inside the bracket it will be 25 into 6 is 150 into 12 minus 1 which is 11 divided by 66. 11 से जाएगा 6 times 150 by 6 will be equal to 25 days. So answer will be 25 days. Is that clear? ठीक है, या फिर अपनी कैलकुलेशन को और भी सिंपल रखना हो, क्योंकि क्वेश्चन में सी का सिर्फ इतना ही यूज है. वंस यू हैव नोन द टाइमिंग कि ए इज कंप्लीटेड वर्क इन 50 days, बी इज कंप्लीटेड इन 60 days एंड सी इज कंप्लीटेड इन 72 days, तो सी इज वर्किंग अलोन ओनली फॉर 6 days. उसके बाद में तो सी का काम खत्म हो जाता है कि नहीं. और सी का टोटल टाइम टेकन इज 72 days. तो कैन वी से दैट इफ सी इज टेकिंग टोटल 72 days का टाइम, तो इन 6 days ही विल बी वर्किंग ओनली 1/12. Isn't it so? His work will be only equal to 1/12. So A, B and C 50, 60 and 72. So in 6 days, C will be completing 1/12 work. So A and B will be doing 11/12 work. Isn't it so? 11/12 work करेंगे. और एक दिन का A का वर्क कितना होगा? 1/50. 1 day work of B will be 1/60. So total work in 1 day will be 6 plus 5 by 300 which is 11/300. और हमें चाहिए 11/12 वर्क इन टोटल. तो टाइम टेकन विल बी 11/12 which is total work needed to be done divided by 11/300. 11 will be getting as around 300/12 will be equal to 25 days. ऐसे भी कर सकते हो. और या फिर अब ए और बी का एलसीएम ले लो, क्योंकि हमें 11/12 वर्क करना है. तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी यानी 50 एंड 60 विल बी 300. एफिशिएंसी ऑफ ए विल बी 6, एफिशिएंसी ऑफ बी विल बी 5, और यहाँ पे 1 डे का वर्क विल बी 11 और वर्क करना है 300 into 11/12. So this will be the answer. This is the work needed to be done and 11 is the cumulative efficiency of A and B. तो बस 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया, 300/12. दैट विल बी द आंसर. तो अपने लिए क्वेश्चन को जितना सिंपल रखो उतना बेटर है, ताकि कैलकुलेशन में मिस्टेक भी नहीं हो, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगे. ओके, परफेक्ट है. अगला क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ एक्स वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 13, सो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू जेड. What will be maximum possible value of the expression x square yz, where the sum given of x plus y plus z that is constant. तो जब भी सम कांस्टेंट गिवन हो और हमें प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमाइज करनी हो, तो क्या करेंगे वहां पे? एम जी एम इज द मोस्ट एफिशिएंट मेथड. एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम. बट यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर वाई जेड चाहिए. एक्स इंटू वाई इंटू जेड, यानी कि एक्स बेसिकली हैज टू बी डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स. So we can write x plus y plus z is equal to 13 as x by 2 plus x by 2 plus y plus z. Now there are 4 numbers, so divided by 4. This will be arithmetic mean, and that will be greater than equal to 1 by 4 of x by 2 into y into z. Now equality will hold when all these 4 are equal. Okay? So equality कब hold करेगी? When x by 2 is equal to y is equal to z. Okay, clear है? तो all these 4 will be equal, यानी कि all these 4 will be equal to 13/4. टोटल सम डिवाइड बाई 4. बट प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि एक्स वाई जेड हमारे डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. दे आर नॉट इक्वल, दे कैन नॉट बी इक्वल, यानी एक्स बाई 2 वाई एंड जेड कैन नॉट बी इक्वल बिकॉज दे आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स. इजंट इट सो? तो क्या सॉल्यूशन ले सकते हैं यहाँ पे? डेफिनेटली वी हैव टू टेक वैल्यूज एज क्लोज, वाई एंड जेड शुड बी एज क्लोज टू दिस वैल्यू एज पॉसिबल. 13/4 इज रफली 3 and 1/4. Isn't it so? So we can take one value. Let us say we can take y is equal to 3 and z is equal to 4. In that case, since x plus y plus z is equal to 13, तो x will be equal to 6. ठीक है, एक केस हो सकता है. या we can take x is equal to 7 and y is equal to 3 and z is equal to 3. दोनों केसेस we can find out value of x square y z. So in the first case, value will be 36 into 12. Which is 432. And in the second case, value will be 7 square, which is 49 into 9. So that will be 441. तो लार्जर वैल्यू आ रहा है हमारा सेकंड केस में 441. बट प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि हमें एक्स वाई एंड जेड शुड बी डिस्टिंक्ट ऑल्सो, एंड हेंस वाई एंड जेड शुड नॉट बी इक्वल. दे कैन नॉट बी इक्वल, एंड हेंस दिस केस मस्ट बी रिजेक्टेड, एंड हेंस 432 विल बी द आंसर एंड नॉट 441. ओके, आंसर विल बी 432. क्या ये बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं. Find the sum of the squares of all real values of x that satisfy the following equation: log of 9 to the power x minus 1 plus 7 on the base 2 is equal to 2 plus log of 3 to the power x minus 1 plus 1 on the base 2. So log of 9 to the power x minus 1 plus 7 on the base 2
and that is equal to 2 plus log of 3 to the power x minus 1 plus 1 on the base 2. Now if we square 3 to the power x minus 1 whole squared, ठीक है, a to the power in general a to the power m to the power n, this is same as a to the power n to the power m. Okay, so 3 to the power x minus 1 whole squared will be same as 3 square to the power x minus 1 or 9 to the power x minus 1. And if we assume that 3 to the power x minus 1 this is equal to y, so 9 to the power x minus 1 will be y square. Okay, so we can write this as log of y square plus 7 on base 2. अब इस 2 को भी कन्वर्ट करेंगे लॉग में, तभी तो लॉग को रिमूव कर पाएंगे. सो 2 कैन बी रिटन एज बाय log of 2 on the base 2, this will be equal to 1. So we can write this 2 as log of 2 square on the base 2 plus log of 3 to the power x minus 1 which is y, so y plus 1 on the base 2. Now log of a plus log of b, that is equal to log of ab, so we can write right hand side as log of 4 into y plus 1 on the base 2 and that is equal to log of y square plus 7 on the base 2. अब इसको कम से कम स्टेप में करना है, तुम्हें समझाने के लिए इतने स्टेप लिखे हैं, अदरवाइज स्ट्रेट अवे लिखोगे. ठीक है, सो नाउ वी कैन कंपेयर दीज टू. तो स्ट्रेट अवे these values will be equal. So y square plus 7, this will be equal to 4 into y plus 1 or 4y plus 4. So y square minus 4y plus 3, this is equal to 0, which implies that y minus 1 into y minus 3, this is equal to 0. So y will be equal to 1 or y will be equal to 3. और y हमारा 3 to the power x minus 1. So 3 to the power x minus 1 will either be equal to 1 or 3 to the power x minus 1 will be equal to 3. तो फर्स्ट केस में 3 to the power x minus 1 is equal to 1 implies 3 to the power 0, यानी कि x minus 1 will be equal to 0. एंड सेकंड केस में x minus 1 is equal to 1. तो x is equal to 2 आ गया और x will be equal to 1. x is equal to 1 और x is equal to 2. ओके, और सिंस यहाँ पे हमारा लॉग के अंदर these values are in positive, 9 to the power x minus 1 हो, 3 to the power x minus 1 हो, all these values will be greater than equal to 0 and we are adding 7 and adding 1, so these are always greater than 0. तो डोमेन का कोई कंसर्न नहीं है, डोमेन तो ऑलवेज सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, बोथ विल बी द सॉल्यूशंस. हमें क्वेश्चन पूछा है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड हेंस 5 विल बी आवर आंसर. बस डोमेन को हमेशा लॉग का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो डोमेन को हमेशा चेक करना है कि लास्ट में जो आंसर्स हैं आर दोज आंसर्स सेटिस्फाइंग द डोमेन और नॉट. ओके, सो इन दिस केस तो हमेशा ही करेंगे बिकॉज 9 to the power x minus 1 will always be positive for any value of x and then we are adding 7. Or in the second case 3 to the power x minus 1 will always be positive and we are adding 1. So if you are adding something to a positive value that will always be positive without any doubt whatsoever. अगर subtract करते तो फिर हमें consider करना पड़ता. Next question. Shreya received her first salary of rupees 24,000 and went shopping at a nearby shopping central. She spent 37.5% of her salary there. Out of this total expenditure, 22.22% was spent on groceries. Noodle packs accounted for 20% of the grocery bill. She bought n noodle packs in total, out of which 8 were ramen noodles and the remaining were hakka noodles. Each hakka noodle pack cost rupees 16. The price of each ramen noodle pack was rupees x, where x is the smallest number that has exactly 6 factors. Find the cost of n noodles. Brilliant question hai. Pause the video and try to solve it. There are two parts to this question. One part is that x is the smallest number that has exactly 6 factors. So what will be the smallest number that has exactly 6 factors? Okay, what is the smallest number that has exactly 6 factors? So if we take one number, let us say the number n is equal to not n यहाँ पे वैसे भी लिखा हुआ है, तो हमने कोई इन जनरल नंबर लिया and that number is let us say a, and a is equal to some prime to the power a1 multiplied by some other prime to the power a2. So number of factors in this case will be equal to a1 plus 1 multiplied by a2 plus 1. Yeah, if we had taken a number, let us say 2 square into 3 to the power 5, तो फैक्टर्स कितने होंगे? फैक्टर्स विल बी 2 to the power 2 है, हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम के पावर्स में ही लिखेंगे, तो 2 स्क्वायर है, सो वी कैन हैव in a factor we will be having either 2 to the power 0 or 2 to the power 1 or 2 to the power 2.
तो possibilities for power of 2 will be equal to 2 plus 1 which is equal to 3. Similarly 3 का power can be 0 or 1 or 2 or 3 or 4 or 5. यानी कि total possibilities for the power of 3 will be 5 plus 1 which is equal to 6. The number of factors will be 18. That is the logic behind a1 plus 1 into a2 plus 1. Okay. अब हमें इस केस में क्या चाहिए? Smallest number that is exactly 6 factors. तो 6 factors ultimately number of factors तो इसी तरह से आएगा. तो 6 can be either it is 6 or 6 into 1 or it can be 2 into 3. दो केसेस बनेंगे. ठीक है. सो इफ 6 इज द फैक्टर्स, सो ईदर दैट नंबर इज सम प्राइम नंबर टू द पावर 5. ये केस हो सकता है, बिकॉज इन दैट केस देयर विल बी 5 plus 1 6 फैक्टर्स, और इट कुड बी सम प्राइम नंबर टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय सम अदर प्राइम नंबर टू द पावर 2, बिकॉज इन दैट केस फैक्टर्स क्या होंगे? 1 plus 1 into 2 plus 1 which is equal to 6. तो यही दो केस बनेंगे. ईदर इट विल बी some prime number to the power 5 or it can be some prime number to the power 1 multiplied by some prime number to the power 2. क्या ये क्लियर है? ठीक है. और हमें चाहिए स्मॉलेस्ट सच नंबर. तो इफ वी नीड स्मॉलेस्ट सच नंबर देन दीज प्राइम नंबर शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल. फर्स्ट केस में स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ सकता है? सम प्राइम टू द पावर 5, स्मॉलेस्ट प्राइम इज 2, तो 2 टू द पावर 5 कैन बी द स्मॉलेस्ट नंबर विच विल बी इक्वल टू 32. दैट विल बी इक्वल टू 32. बट क्योंकि प्राइम का पावर 5 हो गया है, दैट इज वाई नंबर हमारा लार्जर है. सेकंड केस से हमें स्मॉलर वैल्यूज मिलना चाहिए, बिकॉज इन सेकंड केस वी हैव सम प्राइम टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय सम अदर प्राइम टू द पावर 2. तो यहां से हमें स्मॉलर वैल्यूज मिलेगा. अब स्मॉलेस्ट 2 प्राइम्स चाहिए हमें, तो वी कैन हैव p1 इज इक्वल टू 2 एंड p2 इज इक्वल टू 3. स्मॉलेस्ट प्राइम्स है. या फिर ऑपोजिट वाइस वर्सा कि p1 इज इक्वल टू 3 एंड p2 इज इक्वल टू 2. नाउ स्मॉलर नंबर तब मिलेगा व्हेन जिस नंबर की पावर ज्यादा है उसको हम स्मॉलर लें. Isn't it so? तो smaller case will be when we are taking p2 equal to 2 and p1 equal to 3. In this case, our number will be 3 into 2 square, which is equal to 4 into 3, 12. First case में number हो जाएगा 2 into 3 square, which will be 18. But definitely smallest number in this case is 12. Okay. So our smallest number x that has exactly 6 factors, that will be equal to 12. X should be equal to 12. क्या ये clear है? Okay. So 12 is the number. So x should be equal to 12. That much should be clear. Okay. So x हमारा equal to 12 आ गया. अब अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे चलते हैं. So the question was saying that first salary of Shreya was 24,000, and out of this 24,000 she went shopping and she spent 37.5% of the salary there. 37.5% is equal to 3 by 8. So she spent 3 by 8 of her salary there. So 3 by 8 of 24,000, that is equal to 9,000. So 9,000 rupees she spent over there. Out of this total expenditure, 22.22%, which is basically equal to 2 by 9. 22.22%, which is equal to 2 by 9 of 9,000. So that will equal to 2,000 rupees. So 2,000 rupees she spent on groceries. This is expenditure on groceries. Now noodle packs accounted for 20% of her grocery bill. Make it 20% of 2,000, which is 1 by 5 of 2,000, which is equal to 400 rupees. So she purchased total noodle packs of 400 rupees. And then it is saying she bought total n noodle packs, out of which 8 were ramen noodles and remaining were hakka noodles. So 8 were ramen and remaining were hakka. So hakka will be n minus 8. Okay. And each hakka noodle costed rupees 16. And cost of ramen noodles is equal to rupees x, which is equal to rupees 12. Simple equation बन जाएगा. तो 8 into 12, that is equal to 96 plus n minus 8 into 16, and this is equal to 400. So 96 minus 128, so 16n minus 32 is equal to 400, and hence n will be equal to 432 divided by 16, and hence equal to 27. N comes out to be equal to 27. Question is asking about cost of n ramen noodles. So answer will be 27 into 12, which is equal to 324 rupees. Option C will be the answer. Okay. क्या ये क्लियर है? क्या ये समझ पा रहे हो? सो अप्रिशिएट कर पा रहे हो इन बातों को? सो दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. दैट इज इवन बेटर. A transport company has two types of trucks, type A and type B. Type A truck
has a refrigerated capacity of 20 units and a non-refrigerated capacity of 40 units, while type B has the same overall capacity with equal capacity for refrigerated and non-refrigerated stock. A grocer needs to hire trucks for the transport of 3000 units of refrigerated stock and 4000 units of non-refrigerated stock. The cost per kilometer of type A and type B trucks is rupees 300 and rupees 400 respectively. If grocer intends to achieve the minimum total cost and hence he hires M trucks of type A and N trucks of type B, then find difference of M and N. Intent क्या है? Intent grocer का है to achieve the minimum total cost. And there are two types of trucks, type A and type B. So for type A, refrigerated capacity is 20 units and non-refrigerated capacity is 40 units. So refrigerated capacity for type A is that of 20 units and non-refrigerated is equal to 40. And for type B, the values are 30 and 30, equal values. Excellent. Type A has 20 and 40. Type B has the same overall capacity. Overall capacity same है, लेकिन total is 60 for both, and hence equal for refrigerated and non-refrigerated, 30 each. Okay. And we are taking, grocer is taking M types of truck A, M trucks of type A and N trucks of type B. तो total capacity कितना हो जाएगा? Total refrigerated capacity will be equal to 20M plus 30N. And total non-refrigerated capacity will be equal to 40M plus 30N. And grocer needs to hire trucks for the transport of 3000 units of refrigerated stock and 4000 units of non-refrigerated stock. That is the intent. So 20M plus 30N must be greater than or equal to 3000 units. That should be our first condition. 20M plus 30N, this should be greater than or equal to 3000 units. And second condition will be that 40M plus 30N, non-refrigerated stock capacity should be greater than or equal to 4000. So 40M plus 30N, that should be greater than or equal to 4000. अब जितना सिंप्लीफाई हो रहा है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो डिवाइड बाय 10 both the equations. First equation will be 2M plus 3N greater than or equal to 300, and second equation will be 4M plus 3N greater than or equal to 400. These are our two equations. Then question is asking that cost per kilometer of type A and type B trucks is rupees 300 and rupees 400 respectively, and intent is to minimize the total cost. तो अगर M trucks of type A हैं और N trucks of type B हैं तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? पर किलोमीटर कॉस्ट गिवन है 300 and 400. तो टोटल कॉस्ट, if there are M trucks of type A तो 300 into M will be per kilometer cost. और अगर K किलोमीटर जा रहे हैं 300 M will into K, that will be the cost. और similarly for N trucks of type B the cost will be 400 N multiplied by K. तो K तो कांस्टेंट है, K तो बाहर आ जाएगा और K पे हमारा आंसर डिपेंड नहीं करता है बिकॉज वो तो डिस्टेंस दोनों के लिए कांस्टेंट ही रहेगा. तो K इंटू 300M प्लस 400N. सो दिस हैज टू बी मिनिमाइज्ड as minimum as possible. This has to be minimized. Okay. So K is a constant. K की बॉदर नहीं करना है. 300M plus 400N has to be minimized in this case. अब lesser cost कहाँ पे लग रहा है? Lesser cost is for A type of trucks. B type of trucks के लिए cost is higher. तो हमारा cost minimize कब होगा? Cost will be minimized when number of trucks of type B will be lesser. Cost will be minimized when type B trucks are lesser. Isn't it so? That is first thing. बट इसका ये मतलब नहीं कि उनको जीरो कर दो कि टाइप बी ट्रक्स को तुमने इफेक्टली जीरो कर दिया. बिकॉज जीरो कर दोगे हमें अल्टीमेटली ऑप्टिमाइज करना है अपनी रेफ्रिजरेटर और नॉन रेफ्रिजरेटर कैपेसिटी को. नंबर ऑफ ट्रक्स को भी तो ऑप्टिमाइज करना है. ऐसा नहीं कर सकते कि किसी एक टाइप के ट्रक को तुमने जीरो कर दिया. ओके वो भी करके देख लेते हैं ताकि बातें समझ में आ जाए. तो वो भी एक बार एज्यूम करके देख लेते हैं. बट अल्टीमेटली हमें ऐसा नहीं करना है बिकॉज अगर तुम ऐसा करोगे तो कॉस्ट विल नॉट बी मिनिमम. दैट विल नॉट बी मिनिमम. ओके तो लेट अस फर्स्ट डू दैट एज वेल कि इफ वी टेक m इज इक्वल टू 0, देखिए नंबर ऑफ टाइप A ट्रक्स आर 0, तब टाइप बी ट्रक्स कितने आएंगे? एन का वैल्यू क्या आएगा? क्योंकि वी नीड ट्रांसपोर्ट ऑफ 3000 रेफ्रिजरेटर स्टॉक एंड 4000 नॉन रेफ्रिजरेटर स्टॉक. और टाइप बी ट्रक्स के लिए दोनों कैपेसिटी इक्वल है. बोथ आर इक्वल टू 30. बोथ आर इक्वल टू 30. तो टाइप बी ट्रक्स नीडेड कितने होंगे? दैट विल बी 3000 रेफ्रिजरेटर. वी हैव टू ट्रांसपोर्ट 3000 डिवाइड बाय 30. लेकिन देयर शुड बी एटलीस्ट 100 ट्रक्स एज पर रेफ्रिजरेटर कैपेसिटी. नॉन रेफ्रिजरेटर डिवाइड बाय 30 करोगे यानी कि वी नीड 400 बाई 3 यानी कि रफली 134 ट्रक्स.
बिकॉज ट्रक्स तुम्हारे फ्रैक्शन में थोड़ी होंगे। तो वी नीड 134 टाइप बी ट्रक्स, बिकॉज 134 चाहिए एज पर नॉन रेफ्रिजरेटर कैपेसिटी, और रेफ्रिजरेटर कैपेसिटी के हिसाब से चाहिए 100, तो तुम्हें 134 ट्रक्स लेने पड़ेंगे। तो 134 ट्रक्स ऑफ टाइप बी will be taken in that case, n is equal to 134 आ गया। This is our first scenario when m is equal to 0. Similarly, if we take n is equal to 0, तो इन दैट केस नंबर ऑफ ए टाइप ट्रक्स कितने होंगे, क्योंकि फिर वहां पे हमें कैपेसिटी कितना चाहिए, कैपेसिटी चाहिए 20 यूनिट्स है कैपेसिटी एक ट्रक का फॉर टाइप ए, फॉर रेफ्रिजरेटेड एंड नॉन रेफ्रिजरेटेड कैपेसिटी इज 40, तो 3000 by 20 विच इज इक्वल 150 ट्रक चाहिए एज पर रेफ्रिजरेटेड कैपेसिटी एंड 4000 by 40 यानी कि 100 चाहिए एज पर नॉन रेफ्रिजरेटेड। तो 150 और 100 में से हायर वैल्यूज है 150, तो विल बी टेकिंग m is equal to 150 when n is equal to 0. दिस इज सेकंड कंडीशन। बस ये समझाने के लिए, तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए इतना डिटेल में लिख रहे हैं, अदरवाइज इस स्टेप की जरूरत नहीं है। बट क्योंकि यहाँ पे यूल बी रियलाइजिंग नाउ कि वाई वी डू नॉट नीड वन ट्रक्स टू बी जीरो, क्योंकि हमें ये तो पता है कि देखो कॉस्ट मिनिमम कब होगा, व्हेन देयर आर लेसर टाइप बी ट्रक्स। बट अल्टीमेटली यहाँ पे हो क्या रहा है, अल्टीमेटली इफ यू आर टेकिंग फर्स्ट केस एन इज इक्वल टू 134 आ रहा है, यू आर टेकिंग 134 ट्रक्स ऑफ टाइप बी, तो कॉस्ट कितना आएगा, कॉस्ट पर किलोमीटर विल बी इक्वल टू 400 into 134. Isn't it so? So that will be equal to 520, 536, 000, तो 53,600. एंड सेकंड केस में कॉस्ट क्या आएगा, कॉस्ट पर किलोमीटर व्हेन ऑल ट्रक्स आर टाइप ए, तो दैट विल बी इक्वल टू 300 into 150 एंड इज इक्वल टू 45,000. तो एक केस में कॉस्ट इज 45,000 व्हेन वी हैव टेकन ओनली टाइप ए ट्रक्स, एंड सेकंड केस में कॉस्ट इज 53,600 व्हेन वी आर टेकिंग ओनली टाइप बी ट्रक्स. Isn't it so? But this is not the minimum cost. Minimum cost will be somewhere in the middle, somewhere in the middle sweet spot. तो उसके लिए हमें दो कंडीशंस जो गिवन है, 2m plus 3n greater than equal to 300 and 4m plus 3n greater than equal to 400, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। और इनको सॉल्व करके हमें मिलेगा वो एक ऑप्टिमम कॉस्ट। ओके, सो जब इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्योंकि दीज आर इनइक्वालिटीज, तो पहले इनको इनइक्वालिटी बना के, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी बना के, इक्वेशन बना के इनको सॉल्व करके एक वैल्यू पे ले आते हैं, और फिर वहां से अपनी वैल्यूज को आसपास मैनिपुलेट करेंगे सो दैट m and n शुड बी इंटीजर्स एज वेल। ओके, सो पहले इनको इक्वालिटी बनाते हैं, 2m plus 3n is equal to 300 and 4m plus 3n that is equal to 400. 4m plus 3n equal to 400. If we solve these two, so 3n plus 3n will be getting cancelled out. If I subtracting first equation from second, so 2m will be equal to 100, and hence m will come out to be equal to 50. And if m is 50, then 2m is equal to 100. So 3n is equal to 200. So n will be equal to 200 by 3. क्या ये क्लियर है कि m will be equal to 50 and n will be equal to 200 by 3 when we are solving these two equations. Okay, फ्रेश पेज पे कर लेते हैं। तो 2m plus 3n was equal to 300 and 4m plus 3n was equal to 400, and hence 2m will be equal to 100, m is equal to 50, and finally 3n will be equal to 200, so n will be equal to 200 by 3. तो हमें m और n की वैल्यूज मिल गई, m is equal to 50 आ गया और n is equal to 200 by 3 आ गया, 66.66. बट सिंस दिस विल नॉट बी इंटीजर एंड n अभी 66.66 है, नॉट ए इंटीजर, तो हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और हमें वैल्यू लेसर कब मिलेगा, लेसर तब मिलेगा व्हेन वी आर टेकिंग n नंबर ऑफ दिस नंबर एज लेसर वैल्यू। ये वैल्यू कम चाहिए हमको, isn't it so? तो क्या मैनिपुलेशन करेंगे, 0.66 ट्रक में कितना आएगा, अल्टीमेटली n यानी टाइप बी का ट्रक है, n यानी टाइप बी ट्रक है, एंड m यानी टाइप ए ट्रक है, तो टाइप बी के 0.66 ट्रक में कितना आएगा, बिकॉज वन ट्रक में देयर इज 30 एंड 30, 30 रेफ्रिजरेटेड एंड 30 नॉन रेफ्रिजरेटेड, 0.6 में देयर विल बी 20 रेफ्रिजरेटेड एंड 20 नॉन रेफ्रिजरेटेड. दिस इज द कैपेसिटी ऑफ दिस ट्रक. सो कैन वी रिप्लेस इट विद वन टाइप ए ट्रक, कर सकते हैं, क्योंकि टाइप ए ट्रक में 20 हमारा रेफ्रिजरेटेड जो आ रहा है यहाँ पे वो आ जाएगा, और जो 20 नॉन रेफ्रिजरेटेड है वो भी आ जाएगा. सो डेफिनेटली इफ वी टेक 51 ट्रक्स ऑफ टाइप एम and 66 trucks of 51 trucks of type A and 66 trucks of type B, that will be optimized solution, isn't it so? क्योंकि इंस्टेड अगर हम करते हैं 50 and 67, बिकॉज पूरा एक ट्रक लोगे, 4.66 ट्रक तो लोगे नहीं, तो ऑब्वियसली 50 और 67 करोगे, वहां पे तुम्हारा वन ट्रक का कॉस्ट ऑफ टाइप बी इज हायर देन वन ट्रक का कॉस्ट फॉर टाइप ए. तो दिस विल बी मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन. कॉस्ट विल बी मिनिमम इन दिस केस. अब कितना कॉस्ट आएगा निकाल भी लेते हैं. तो द कॉस्ट विल बी 51 into 300 per kilometer plus 66 into 400. This will be total cost per kilometer. क्या आ जाएगा, this will 51 into 3, so 15,300 plus 66 into 4, so 264, 26,400
400. 26 plus 15, 41,700 will be our cost. So this is the minimum possible cost per kilometer, 41,700. And हमें आंसर क्या चाहिए? डिफरेंस बिटवीन m एंड n. तो m is 51 and n is 66. डिफरेंस इज इक्वल टू 15. ऑप्शन डी इज द आंसर. क्या ये अप्रिशिएट कर पाए? क्या ये समझ पाए कि अल्टीमेटली हमें क्या करना था? यहाँ पे सबसे पहले हमने अपनी दो इक्वेशंस बनाई, 20m plus 30n that is ग्रेटर देन इक्वल टू 3000 एज पर द रेफ्रिजरेटर एंड नॉन रेफ्रिजरेटर कैपेसिटी फॉर बोथ टाइप ए एंड टाइप बी ट्रक्स. सेकंड इक्वेशन बना हमारा 40m plus 30n ग्रेटर देन इक्वल टू 4000. अब अल्टीमेटली हमें पता है कि वी नीड to minimize the total cost, and to minimize the total cost we need lesser number of type B trucks, more number of type A trucks. Then we solve these inequalities. We found out the value of m and n as 50 and 200 by 3. Now since we need lesser number of type B trucks, तो जो टाइप बी में हमारा 1 ट्रक एक्स्ट्रा आ रहा है, 0.66 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उसको दैट वी एडजस्टेड इनटू टाइप ए ट्रक एंड दैट गॉट अस द मिनिमम टोटल कॉस्ट पर किलोमीटर फॉर द ट्रक्स फॉर द ग्रॉस. इज दैट क्लियर? दिस इज अ ब्रिलियंट क्वेश्चन एंड आई बिलीव कि तुम्हें सारी बातें समझ में आई होंगी. एंड मैं ऑल्सो मेंशन इन द कमेंट्स अगर फिर भी कहीं पे कोई डाउट रहता है तो. ओके, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, और हमने साथ में ये भी देख लिया कि इफ यू आर टेकिंग वन टाइप ऑफ ट्रक्स एज जीरो, then definitely you are not getting the minimum cost, because यहाँ पे cost तुम्हारा 45,000 and 53,600, but our actual cost is coming out to 41,700, which is far lesser, isn't it so? Because यहाँ पे हम दोनों ट्रक्स को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, बिकॉज एक ट्रक हमारा जो है टाइप ए ट्रक दैट इज गिविंग अस लेसर क्वांटिटी ऑफ रेफ्रिजरेटेड कैपेसिटी, isn't it so? तो फॉर दैट वी नीड मोर टाइप बी ट्रक्स. सिमिलरली टाइप ए ट्रक इज गिविंग अस मोर क्वांटिटी ऑफ नॉन रेफ्रिजरेटेड कैपेसिटी पर ट्रक, तो उसके लिए हमें टाइप ए ट्रक्स भी चाहिए. दोनों का अपना अपना बेनिफिट है, अपना अपना नुकसान है. दैट इज वाई वी नीड बोथ टाइप ऑफ ट्रक्स एंड नॉट वन टाइप. Okay, next question. A quadratic equation is given by x square minus bx plus c by 2 is equal to 0. Two fair six-sided dice are rolled. The number appearing on the first dice is taken as b and number appearing on the second dice is taken as c. What is the probability that the equation has real roots and the value of the sum of the roots is greater than the product of the roots? Value of the sum of the roots is greater than product of the roots. So these are the two conditions जिनको कि हमें साथ में satisfy कराना है. What will be the answer? Sum of the roots is equal to b for the quadratic equation and product is equal to c by 2, and we need sum to be greater than the product, like b should be greater than c by 2. This is our first condition, and second condition is that equation should have real roots, like discriminant should be greater than or equal to 0. b square minus 4ac, so capital B square minus 4 into 1 into c by 2, which is equal to 2c. b square minus 2c greater than or equal to 0. b square should be greater than or equal to 2c. This is our second condition. Okay. So क्या क्या values possible है? Since b and c both are numbers appearing on the first dice and second dice, so b can be equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Either 1 or 2 or 3, 4, 5 and 6. And c can also be 1, 2, 3, 4, 5, 6. When we are taking b is equal to 1, so b should be greater than c by 2. So b should be greater than c by 2, यानी कि 1 should be greater than c by 2. And if 1 should be greater than c by 2, so that implies तो उस केस में क्या होगा हमारा 1 should be greater than c by 2, यानी कि c should be less than 2. If 1 has to be greater than c by 2, so c should be less than 2. तो c can be equal to 1. ठीक है, c can be equal to 1 और कोई वैल्यू c का पॉसिबल नहीं है, बिकॉज c has to be less than 2. Now c can be equal to 1. Now second condition है हमारा b square should be greater than equal to 2c, यानी कि 1 should be greater than equal to 2c. तो क्या कोई वैल्यू सेटिस्फाई करेगा? c should be less than equal to 1 by 2. As per this condition c should be less than equal to 1 by 2, लेकिन no value of c is satisfying in this case, तो कोई भी हमें satisfying solution नहीं मिलेगा. Second case, because 1 should be greater than equal to 2c, यानी कि c should be less than equal to 1 by 2. No solution. Second case, when b is equal to 2. So if b is equal to 2, then 2 should be greater than c by 2. यानी कि c should be less than 4. So 1, 2 and 3 possible cases. Now b square will be equal to 2 square, which is equal to 4, and 4 should be greater than equal to 2c. So that implies that c should be less than equal to 2. तो यहाँ पे हमें दो केसेस मिलेंगे, c is equal to 1 and c is equal to 2. Two cases will be getting. Third case, when b is equal to 3, तो b should be greater than c by 2, 3 should be greater than c by 2, यानी कि c should be less than 6. So c can be 1, 2, 3, 4 and 5. So 5 values for c. Now b square should be greater than equal to 2c, यानी कि 9 should be greater than equal to 2c.
तो C should be less than equal to 4.5, यानी कि C is equal to 1, 2, 3 and 4. These values will be getting. Now fourth case, when B is equal to 4, तो 4 should be greater than C by 2, यानी कि C should be less than 8, यानी कि all values of C will be satisfying this condition. सिमिलरली 5 और 6 के लिए भी पहली कंडीशन तो दोनों ही सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि 4 पे ही कर रहा है तो 5 पे भी करेगा और 6 पे भी करेगा. ऑल 6 वैल्यूज विल बी सेटिस्फाइंग फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन पे क्या होगा, सिंस बी स्क्वायर इफ बी इज इक्वल टू 4, बी स्क्वायर विल बी 16, 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 2C, तो यानी कि C शुड बी लेस देन इक्वल टू 8, यानी कि सेकंड कंडीशन में सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, चाहे वो 4 के लिए हो या 5 के लिए हो या फिर 6 के लिए हो. यानी कि बस हमें पहली 3 वैल्यूज के लिए टेस्ट करना था, बाद में तो चीज़ें ईजी हैं. तो टोटल कितने सेटिस्फाइंग केसेस आए हमारे. फर्स्ट केस में नो सॉल्यूशन, सेकंड में 2 केसेस, थर्ड में 4 केसेस एंड देन ऑल 6 केसेस और रिमेनिंग 6. तो 6 + 6 2 + 4 + 6 + 6 + 6 दैट इज इक्वल टू 24 केसेस आउट ऑफ टोटल केसेस कितने हैं, 6 इन द फर्स्ट डाइस, 6 इन द second dice. Total cases are 36. 24 by 36 will be our answer, which is equal to 2 by 3, option C. Okay. So a brilliant question involving probability and quadratic equations, isn't it so? क्या ये क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Two high-performance racing drones, Alpha and Beta, are flying around a circular track. Starting from the same point at the same time, Shireen records their constant speeds as integers VA and VB in meters per second respectively, where VA is greater than VB. She notices that VA and VB are co-prime. Co-prime यानी कि there is no common factor apart from 1. Their highest common factor, HCF, is equal to 1. The ratio of their speeds VA is to VB is calculated as 1.25, 45, 45, 4 and so on, where 5 4 digits are repeating endlessly. If both drones move in the same clockwise direction, at how many distinct points on the track will Alpha overtake Beta before they meet again at the starting point? Okay, so if the ratio of speeds VA is to VB, if that is equal to M is to N in the most simplified form, because हमें चाहिए total number of distinct meeting points. So if the ratio of speeds is M is to N in the most simplified form, यानी कि HCF of M and N, this is equal to 1, and if this is equal to 1, then number of meeting points when they are moving in the same direction, so when they are moving in the same direction, number of meeting points is equal to difference of M and N. Okay, second case, when they are moving in the same direction, if direction is opposite, so number of meeting points is equal to M plus N. Okay, so if in the same direction, number of meeting points is equal to difference of their speed का ratio, ठीक है, और most simplified form में when HCF of M and N that is equal to 1 and that is equal to M plus N if they are moving in the opposite direction. यहाँ पे तो same direction में है तो हमें ultimately value मिलेगा जो that will be mod of M minus N. But first we needed to find the ratio, the actual ratio VA is to VB. Okay, so VA is to VB, VA upon VB, that is given as equal to 1.2, 54, 54, 54 and so on. तो मान लेते हैं अभी इसको x मान लेते हैं, लेट अस से दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1.2, 54, 54 एंड सो ऑन. नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई इट. सिंप्लीफाई तब होगा जबकि राइट हैंड साइड में डेसिमल के बाद की वैल्यू सारी की सारी खत्म हो जाए. तो पहले तो मल्टीप्लाई दिस बाई 10 बिकॉज अल्टीमेटली 5 4 इज रिपीटिंग ऑल द टाइम, तो ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो दैट इज व्हाई वी विल मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इट बाई 10. तो 10x विल बी इक्वल टू 12.54, 54, 54 and so on. Now since 5 4 2 digits are repeating, so now multiply this further by 100. So now this becomes 1000x, so that will be equal to 1254.545454 and so on. ठीक है, now focus on these two values. 10x is equal to this value, 1000x is equal to this value. Now in both cases decimal के बाद का पार्ट तो सेम है, तो if we subtract तो decimal के बाद का पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा. तो 1000x minus 10x, तो 990x, this will be equal to 1254 minus 12, तो 1242. डेसिमल के बाद की चीज तो कैंसिल होगी, तो x is equal to 1242 डिवाइड बाई 990. इज 1242 डिविजिबल बाई 11? 11 से डिविजिबल तो नहीं आ रहा है. तो पहले किससे डिविजिबल आ रहा है, 2 से तो आ ही रहा है, तो 2 से सिंप्लीफाई करें, दिस विल बी 621, दिस विल बी 495 और 9 से डिविजिबल आ रहा है, तो 9 से 95, हाँ 9 से आ रहा है, 9 से दिस विल बी 9 6 54 69 एंड दिस विल बी 9 5 45, तो 55. तो 69 by 55, this will be the final ratio. And since V and VB are co-prime, so definitely this will be the ultimate ratio, VA upon VB. This will be 69 upon 55.
तो ratio of A and VB that will be 69:55. The speed of ratio of the speed will be 69:55. तो number of meeting points कितने होंगे? 69 minus 55 and hence equal to 14. बट क्वेश्चन हमसे नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स नहीं पूछ रहा है. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन का लैंग्वेज लास्ट में पढ़ना जरूरी है. एट हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन द ट्रैक विल अल्फा ओवरटेक बीटा बिफोर दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. Before they meet again at the starting point. Okay, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर विल बी 13 इन दिस केस, बिकॉज एट द 14th मीटिंग, लास्ट मीटिंग उनका होगा स्टार्टिंग पॉइंट पे, 14th मीटिंग होगा स्टार्टिंग पॉइंट पे. इससे पहले दे मीटिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द ट्रैक, ऑन 13 अदर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन द ट्रैक. ठीक है, तो 14th मीटिंग विल बी ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट, बट बिफोर दैट दे विल मीटिंग एट 13 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन द ट्रैक. So that will be the answer. Total 14 meeting points are there. One of the meeting points is starting point और 14th meeting उनका starting point पे होगा. और 14th meeting होगा कब? When drone A would have completed 69 rounds and drone B would have completed 55 rounds. ठीक है, that would be our meeting number 14. First meeting चाहिए हो तो divide by 14 कर दो. तो first meeting will be at when drone A has completed 69 by 14 rounds and drone B had completed 55 by 14 rounds. यहाँ से तुम्हें किस पॉइंट पे मिलेंगे वही मिल जाएगा. सेकंड मीटिंग चाहिए या nth मीटिंग चाहिए इन जनरल, so that will be equal to 69 by 14 into n rounds completed by A and 55 by 14 into n rounds completed by B. So this will be their nth meeting. Okay, clear है? ठीक है, so next question. A 3-digit number ABC in the decimal system has the property that when converted to base 9, the digits are reversed. Find the sum of the digits A plus B plus C. So what will be sum of digits given in this case? So ABC in the decimal system has property that when converted to the base 9, the digits are reversed. ABC is the number in base 10. And in base 9, the digits are reversed. And this is CBA effectively. And these two are equal numbers. So in base 10, the number will be basically 100A plus 10B plus C, or in general, in any base, if we are writing a number ABC in base n, so that implies that this will be basically place value of this value will be n to the power 0, place value of this will be n to the power 1, and place value of this will be n to the power 2. So this number will be an square plus bn plus c. By the same logic, this will be 100a plus 10b plus c in base 10. And the number will be 9 square into c, and 81c plus 9 to b plus a in base 9. And these two will be equal, obviously. So 100a minus a will be 99a plus 10b minus 9b, that is equal to b, and plus c is equal to 81c, and this is equal to 80c. Now this will be our equation. 99a plus b is equal to 80c. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्योंकि a, b, c all are distinct digits. These are digit values, digits है कि नहीं? तो we have to solve it accordingly. 99a plus b, that is equal to 80c. So what can be the values for a, b and c? Okay. Now if we take a is equal to 1, for example, then this becomes 99. 99 plus b, that is equal to 80c. So we will not be getting any solution for b, any solution for c, because a, b and c all have to be between 0 and 9. They can either be 0 or 1 or 2 or 3 and so on till 9, but not more than that. So 9, if a is equal to 1, there is no solution for b and c. If we take a is equal to 2, this is equal to 198. Again, there is no solution for b and c, because even if we take c is equal to 2, that becomes 160. C is equal to 3 लेते हैं 240 हो जाएगा, so कोई solution नहीं मिलेगा. ठीक है. If we take a is equal to 3, again same logic, 297. So we will not be getting any solution, because even for c is equal to 3, that is equal to 240 only, 57 short रह जाता है. So वहाँ पे b cannot be equal to 57. If we take a is equal to 4, even then a is equal to 5 पे कितना हो जाएगा? That will be a is equal to 4 पे this will be 396. So yes, still shorter because b cannot be minus 4. और a is equal to 5 पे this will be 495 and c can be equal to 6. If we take a is equal to 5, तो this will be 495. And if we take c is equal to 6, this will be 480. तो still हमें b चाहिए 15, not possible. a is equal to 6 पे this will be 594. ठीक है. a is equal to 5 पे क्या आ रहा है? 495 आ रहा है ना? Not possible. So if we take a is equal to 6, the value will be 594. a is equal to 7.
will be 693. A is equal to 8, 792. और यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगा, सी के लिए हमें क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल मिलेंगे जो कि 99 ए के क्लोजेस्ट हो. तो इफ यू टेक सी इज इक्वल टू 1, दिस कैन बी 80, 160, 240, 320, 400. अच्छा हाँ, वो तो हो तो जा रहा है. ए इज इक्वल टू 5, ये 495 आ रहा था, और ना ए इज इक्वल टू 4 पे आ रहा था ना, ए इज इक्वल टू 4 पे. यस, ए 4 पे हो रहा है क्योंकि सम हो रहा है ना, बी सम कर रहे हैं. तो ए इज इक्वल टू 4 पे, दिस इज इक्वल टू 396 प्लस 4. यस, दैट इज इक्वल टू 400. हाँ, बन जा रहा है मामला, ध्यान नहीं दिया. तो ए इज इक्वल टू 4 पे दिस विल बी बी इज इक्वल टू 5. इफ यू टेक ए इज इक्वल टू 4, b is equal to 5 and c also equal to 5, then this is satisfying the condition. यानी कि 455, that will be our number in decimal system. So sum of digits will be 4 plus 5 plus 5, that is equal to 30, 4 plus 5 plus 5, that will be equal to, एक सेकंड, 4 प्लस, तो 4 पे 396 प्लस 4 होगा ना. अभी भी ब्लंडर कर रहे थे भाई, यहाँ पे सही लिखा है 4, पता नहीं यहाँ 5 क्यों लिख दिया. 4 प्लस 4 प्लस 5, that will be answer will be 13. Option C, 13 will be the answer. 99A plus B, that will be equal to 80C. Solution will be 4, 4 and 5. Okay. क्या क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Right circular cone is filled with chemical solutions. The cone is cut into 3 parts of equal heights, top, middle, and bottom, by 2 planes parallel to the base. The chemical in each part has a different concentration. The concentration in the top part is 90%, in the middle part is 80%, and in the bottom part is X%. These 3 parts are then mixed together in a large cylindrical vessel. It is observed that if the chemical in the bottom part had been interchanged with the chemical in the top part, यानी कि bottom और top पे interchange कर देते chemicals को, in that case, the final concentration of the mixture would have been 16% higher than the actual final concentration. To find the value of X. So we have a cube, cone, not cube. We have a cone, and that cone is cut into 3 parts. In the top part, we are filling a chemical of different concentration, middle part में different and bottom part में different. Okay, so first of all, we need to find out the volume of these 3 parts. So since heights are equal, ratio of heights is 1 is to 1 is to 1. So we can find out the volume of top cone and the volume of the cone formed by top 2 parts, and then volume of the largest cone. ठीक है. So total volume of, if the volume, this volume is V1, this volume is V2 and this volume is V3. ठीक है. तो हाइट्स क्या है हमारी, हाइट्स का रेशियो इज 1:2:3 फॉर V1, V2 एंड V3. रेशियो ऑफ हाइट इज 1:2:3. तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स विल बी इन द प्रोपोर्शन, इन क्यूब वॉल्यूम विल बी प्रोपोर्शनल टू हाइट क्यूब. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाइट और रेडियस बोथ विल बी प्रोपोर्शनल. सारे के सारे हमारे ट्रायंगल्स अल्टीमेटली क्या होगा, दिस विल प्रोपोर्शनेट, सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे. दैट इज वाई हाइट एंड रेडियस का रेशियो विल बी सेम. दैट इज वाई इफ हाइट का रेशियो इज 1:3, तो वॉल्यूम का रेशियो विल बी 1 क्यूब is to 2 cube is to 3 cube, which is equal to 1 is to 8 is to 27. So if volume of the smallest part is 1, then volume of the V2 will be equal to 8 units and V3 will be equal to 27 units. So with that we can say that volume of the first part will be equal to 1 unit, and volume of the second part, since 8 is equal to V1 plus V2, I mean volume of this part plus this part. So if that total is 8, so the volume of the second part will be 7, and similarly volume of the third part will be 27 minus 8, which is equal to 19. So 1 unit, 7 unit and 90 unit, these will be the volume of the respective parts. अब फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, फर्स्ट पार्ट में केमिकल इन टॉप पार्ट इज 90%, दिस इज 90%, मिडिल पार्ट में इट इज 80%, एंड देन बॉटम पार्ट में दिस इज इक्वल टू X%. तो ओवरऑल एवरेज कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा हमारा, रिस्पेक्टिव वेट्स विल बी these values 1, 7 and 19, the quantities respectively. ठीक है, तो 90 into 1 plus 80 into 7 plus 19x divide by 1 plus 7 plus 19, which is equal to 27. This will be our average concentration. एंड सेकंड केस में क्या होगा कि सेकंड केस में हम इंटरचेंज कर रहे हैं टॉप और बॉटम वाले लिक्विड्स को आपस में, बट मिडिल वाला तो इंटरचेंज रहेगा, अपने मिडिल वाला तो जैसा है वैसा ही रहेगा, अनचेंज रहेगा, तो बाकी को इंटरचेंज कर देंगे. तो सेकंड केस में डिफरेंस ले लो कि 90 की जगह यू विल बी हैविंग x एंड x की जगह यू विल बी हैविंग 90. सो नाउ द एवरेज विल बी, और एवरेज क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है हमारा, क्या हो रहा है, chemical in the bottom part had been interchanged with the chemical in the top part, the final concentration of the mixture would have been 16% higher. यानी कि now this is higher, so now the value will be 19 into 90 plus 80 into 7
plus x divide by 27 minus this value, this is equal to 60. तो 80 into 7 will be getting cancelled out anyway. तो बच जाएगा हमारा 19 into 90 minus 90 नहीं 18 into 90 minus 18x divide by 27 which is equal to 18 by 27 into 90 minus x that is equal to 16. So 9 से cancel किया 2 by 3 हो गया. So effectively this becomes 90 minus x is equal to 60 into 3 by 2 which is equal to 24. X will be equal to 90 minus 24 which is equal to 66. X हमारा आ गया equal to 66 which is option C. क्लियर है? ठीक है, आंसर में आ जाएगा 66 इन दिस केस. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Mr. X borrows rupees 2100 at 10% annual compound interest. He agreed to pay the loan in 2 equal annual installments. The first paid at the end of year 1 and the second at the end of year 2. He pays the first installment as scheduled. However, just before the second installment, the bank changes the interest calculation policy for the second year. Under the new policy, the interest for the second year is calculated as 10% of the initial principal amount and not 10% of the remaining amount, rather than on the outstanding balance. Mr. X pays the second installment equal to the original calculated amount. तो जो पहला कैलकुलेशन किया था उसी के हिसाब से ही पेड द अमाउंट. सो व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग अमाउंट डेफिसिट मिस्टर एक्स स्टिल ओज द बैंक आफ्टर दिस पेमेंट. ओके, सो पहले दोनों इंस्टॉलमेंट्स निकाल देते हैं. क्या वैल्यूज आएगा हमारा? सो सिंस मिस्टर एक्स इज बोरोइंग रुपीज 2100 एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आर इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल 10%. तो हाउ कैन वी कैलकुलेट इंस्टॉलमेंट्स? तो फॉर फर्स्ट ईयर, क्योंकि दोनों ईयर्स का इंस्टॉलमेंट तो सेम ही है, तो फर्स्ट ईयर के लिए इफेक्ट क्या होगा? इफ यू हैव बोरोड लेट अस से 10 रुपीज, तो आफ्टर 1 ईयर कितना पे करना पड़ेगा? बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% विच इज इक्वल टू 1/10, यानी कि अमाउंट ड्यू आफ्टर 1 ईयर विल बी इक्वल टू 10 प्लस इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 1, तो 11. तो अमाउंट बोरोड इनिशियली इफ दैट इज इक्वल टू 10, तो आफ्टर 1 ईयर पेड अमाउंट विल बी इक्वल टू 11. इजंट इट सो? सेम फॉर 2 ईयर्स क्या होगा? इफ इनिशियली यू बोरोड 10 रुपीज, तो आफ्टर 1 ईयर दिस विल बी इक्वल टू 11. एंड सेम फॉर 1 more year, तो 10 to 11 further. So for 2 years, if you borrowed 10 square or 100 rupees, then after 1 years you will have to pay 11 square rupees. Isn't it so? ठीक है, तो क्योंकि दो इंस्टॉलमेंट्स पे किए हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे इफेक्ट कितना आएगा? 10 to 11, और सेकंड इंस्टॉलमेंट इफेक्ट आएगा 10 square to 11 square. ओके, सो 10 to 11 फॉर द फर्स्ट एंड 10 square to 11 square. अब क्योंकि दोनों इंस्टॉलमेंट्स हमारे इक्वल हैं, तो राइट हैंड साइड को इक्वल करना पड़ेगा. भाई कोई भी इंस्टॉलमेंट पे क्यों की जाती है? टू pay the initial amount, तो principal amount. Isn't it so? The first installment, say if you are paying 11 rupees in the first installment, you are actually paying 10 rupees from the principal amount. In the second installment, if you are paying 11 square rupees, then you are actually paying 10 square in the principal amount. ठीक है, so since installments का value is same, 11 and 11 square, these two will be same. तो since second case में 11 square आ रहा है, तो multiply the first equation also by 11. That way your installments will be equal, 11 square in both cases. ठीक है, and this is the principal amount basically that is being paid by that installment. So this in the first case becomes 110, in second case this is 100, 110 plus 100 becomes 210, and total amount paid will be 11 square into 2, 242. Now this 210 amount, which is the principal, that is equal to 2100 rupees. The actual amount is 2100 and not 210 multiplied by 10, यानी कि 1 unit is equal to 10 rupees, and hence one installment will be equal to 11 square into 2, 11 square into 10, because 1 unit is equal to 10, not 2. तो 11 square into 10, that will be 1210 rupees, यानी कि इंस्टॉलमेंट्स शुड बी 1210 rupees. द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एज वेल एज सेकंड इंस्टॉलमेंट बोथ विल इक्वल टू 1210 rupees. ओके, बट ये तो तब होता जबकि सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं और रूल चेंज नहीं होता. बट बैंक ने किया है रूल चेंज. बैंक ने क्या किया कि इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर इज कैलकुलेटेड एज 10% ऑफ द इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट. 1210 should have been the first installment, and that should have been second installment, and Mr. X also paid second installment equal to 1210, but now the interest calculated will not be equal to 10% of the amount that is due, but instead 10% of the amount that is initial amount, 10% of initial principal amount. ठीक है, तो कितना अमाउंट का डेफिसिट रहेगा? दैट इज आवर क्वेश्चन. तो इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होगा? सेकंड ईयर का इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर विल बी 10% ऑफ 2100, ठीक है, दैट इज 210. 210 rupees will be interest for second year. ओके, तो क्या आंसर होगा? जब भी प्रोसेस करते हैं, वेन एवर एन इंस्टॉलमेंट इज पेड इन द बैंक, ठीक है, सो व्हाट हैपेंस दैट फॉर एग्जांपल फॉर द फर्स्ट ईयर
उसके लिए प्रोसेस समझना जरूरी है, अदरवाइज गलती हो सकता है यहाँ पे। देखो, इनिशियली 2100 रुपीज वॉज द प्रिंसिपल अमाउंट। At the end of the first year, interest accumulated will be equal to 10%, which will be plus 210 rupees. The amount due, outstanding balance at the end of year 1 will be equal to 2100 plus 210, 2310 rupees. This is the amount due, outstanding balance. Out of this outstanding balance, Mr. X paid rupees 1210. That is the payment, rupees 1210. That is subtracted. ठीक है. So when that amount is paid, so remaining amount कितना बचा हमारा? 2310 minus 1210, 1100 rupees. So this is the outstanding balance at the end of second year, at the start of second year. Start of second year, start of year 2. 1100 rupees is the outstanding balance. तो इस पे इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होता है? इंटरेस्ट कैलकुलेट ऑन दिस विल 10%, यानी कि प्लस 110 रुपीज, एंड हेंस अमाउंट पेड वाज 1210 रुपीज, जो कि आया वैल्यू हमारा. ओके, बट इंटरेस्ट कैलकुलेशन हुआ कैसे? हुआ ये रूल चेंज ये हुआ कि इन द सेकंड ईयर नाउ इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट एंड नॉट ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस. Interest calculated will not be 110, but this will instead be 210 rupees. This will be 110 rupees extra. 100 rupees extra. And that is why there will be deficit of 100 rupees. Option C will be the answer. Okay. Clear? But to calculate this, पहले हमें इंस्टॉलमेंट का वैल्यू तो कैलकुलेट करना ही पड़ता है कि कितना हम इंस्टॉलमेंट दोनों केसेस में पे कर रहे हैं, उतना ही तो सब्ट्रैक्ट करोगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider a sequence of real numbers defined by x1 is equal to 1 by 3 and xn plus 1 is equal to xn upon 1 plus 3 times xn for all n greater than equal to 1 to determine the value of the infinite sum s, that is equal to sigma यानी कि sum of from n is equal to 1 to infinity of xn into xn plus 1. What will be the value of this sum? Where x1 is equal to 1 by 3 and xn plus 1 this is equal to xn upon 1 plus 3 times xn. So one way to approach this question is find out the value of x2, find out the value of x3, और तुम पैटर्न देखने की कोशिश करो, आइडेंटिफाई द पैटर्न कि हाउ द वैल्यूज आर चेंजिंग. ठीक है. सो x2 विल बी इक्वल टू xn plus 1 क्या है? xn upon 1 plus 3 xn. So if you put n is equal to 1 in this, x2 will be equal to x1 upon 1 plus 3 times x1, और x1 हमारा 1 by 3, तो 1 by 3 upon 1 plus 3 into 1 by 3. That will be 1 by 3 upon 1 by 2. 1 plus 1, no, not 1 by 2, 1 plus 1, that is equal to 2. 1 by 3 upon 2. And hence equal to 1 by 6. Now similarly, put n is equal to, so x3 will be equal to x2 upon 1 plus 3 times x2. यानी कि 1 by 6 upon 1 plus 3 times 1 by 6. So 1 plus 3 by 6 will be 1 plus 1 by 2 and 3 by 2. So 1 by 6 upon 3 by 2, which is 1 by 6 into 2 by 3. And hence 2 by 12, 2 by 18, which is equal to 1 by 9. So 1 by 3 is the x1, 1 by 6 is x2, 1 by 9 is x3. तो क्लियरली हमारी वैल्यू क्या आ रहा है? 1 by xn. आज ब्लेंडर बहुत हो रहा है. अगर x1 हमारा 1 by 3 है, x2 1 by 6 है, x3 1 by 9 है, तो यानी कि xn will be equal to 1 by 3 times n. लेकिन तभी तो हमारा x1 क्या होगा? 1 by 3 into 1, x2 1 by 3 into 2, x3 1 by 3 into 3, x4 1 by 3 into 4, and so on. तो xn हमारा आ गया 1 by 3 into n. अब हमें चाहिए xn into xn plus 1, लेकिन that will be 1 by 3n into 1 by 3 n plus 1, which is equal to 1 by 9 into 1 by n into 1 by n plus 1. Isn't it so? And 1 by n into n plus 1, this is equal to 1 by n minus 1 by n plus 1. 1 by n into n plus 1, that is equal to 1 by n minus 1 by n plus 1. For example, अगर मैंने कहा 1 by 3 minus 1 by 5, so this is equal to डिफरेंस 5 और 3 में कितना है? 2 का डिफरेंस है, तो this is equal to 2 upon 3 into 5. अगर हम कहें 1 by 7 minus 1 by 8, तो डिफरेंस 7 और 8 में 1 का है, तो this is equal to 1 upon 7 into 8. ठीक है. तो इन जनरल 1 by n minus 1 by n plus 1, this will be equal to 1 upon n into n plus 1. और 1 क्या है? बेसिकली दिस इज नथिंग बट n plus 1 minus n upon n plus 1, n into n plus 1. ओके. सो ये वैल्यू हमारा आ गया 1 by n minus 1 by n plus 1. आप सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि आप जैसे ही इसको एक्सपेंड करोगे तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? s विल बी इक्वल टू,
you can write xn into xn plus 1 same as xn minus xn plus 1 और उसका सम करना है. So s will effectively be equal to x1 minus x2 plus x2 minus x3 plus x3 minus x4 and so on till infinity. तो x2 is getting cancelled out, x3 is getting cancelled out and so on. सारे के सारे वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगे. लास्ट में बचेगा क्या? x इन्फिनिटी बचेगा नेगेटिव साइन के साथ और x1 है पॉजिटिव साइन के साथ. और क्योंकि वैल्यूज छोटी होती जा रही है 1/3 1/6 1/9 1/12 एंड सो ऑन, तो लास्ट वैल्यू होगा 1 by almost infinity which will be almost equal to 0. तो s will be equal to x1 only. ओके, एक ब्लंडर हो गया यहाँ पे कि हमारी वैल्यू क्या आ रहा था. हमारा वैल्यू आ रहा था यहाँ पे एक सेकेंड xn इंटू xn प्लस 1 था ना. तो ये दिस वॉज नॉट इक्वल टू सिग्मा, ये गड़बड़ कर दिया. 3 भी आएगा साथ में ना. क्या आएगा 1/3n इंटू 1/3n प्लस 1. तो 1/9 इंटू 1/n इंटू n प्लस 1 ये वैल्यू आ रहा था हमारा, नॉट xn. दिस वॉज नॉट इक्वल टू xn. दिस वॉज इक्वल टू 1/9 इंटू 1/n माइनस 1/n प्लस 1. यानी कि s विल बी इक्वल टू 1/9 कॉमन आ जाएगा. इनसाइड ब्रैकेट दिस विल बी 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 minus 1/3 plus 1/3 minus 1/4 and so on. Okay, so 1/2 will be cancelled out, 1/3 will be cancelled out and so on. सारे कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ 1. तो 1/9 into 1 यानी कि आंसर विल बी 1/9. s will be equal to 1/9. ऑप्शन सी विल बी द आंसर. क्लियर है? ठीक है, आंसर हमारा आ जाएगा 1/9. ओके, अब इसी चीज़ को देखने का एक और मेथड हो सकता था कि हम इसको ऐसे भी देख सकते थे कि x1 इक्वल टू 1/3 गिवन है, xn plus 1 is equal to xn upon 1 plus 3 times xn. So if we instead write this as 1 upon xn plus 1, so this is equal to 1 plus 3 times xn रेसिप्रोकल लिख लिया डिवाइड बाई xn. देखिए अब चीज़ें थोड़ी सी आसान इसलिए हो जाएंगी कि दिस विल 1 by xn और ये वैल्यू क्या होगा 3x times xn upon xn, दिस विल 3 only. तो दिस इज इक्वल टू 1 by xn plus 3. Now we have 1 by xn plus 1. This is equal to 1 by xn minus 3. Isn't it so? ठीक है, तो कैन वी से, कितनी गलती करोगे भाई एक ही दिन में. तो 1 by xn plus 1 is equal to 1 by xn plus 3. ये वैल्यू आ गया. यानी कि नेक्स्ट टर्म 1 by नेक्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1 by xn plus 3. तो क्या ये कह सकते हैं कि यहाँ से 1 by xn 1 by xn plus 1 ये सब के सब टर्म्स हमारे एपी में होंगे. बिकॉज इफ 1 by xn इज इक्वल टू xn, हमारा x1 1/3 है. तो इफ x1 इज इक्वल टू 1/3, तो 1 by x1 क्या होगा 3 होगा. तो 1 by x2 क्या होगा 1 by x1 plus 3 which is equal to 6. 1 by x3 क्या होगा 1 by x2 plus 3 which is equal to 9. यानी कि 1 by x1s are in arithmetic progression. तो x1 1 by x1 1 by x2 and so on, these are in AP. या फिर x1 x2 ये सारे के सारे HP में होंगे, है कि नहीं. और अगर इफ दैट इज द केस तो वी कैन ऑल्सो से दैट 1 by xn plus 1 minus 1 by xn that is equal to 3. So xn minus xn plus 1 upon xn plus 1 into xn this is equal to 3. तो यहाँ से प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, बेसिकली xn minus xn plus 1 upon 3 this is equal to xn into xn plus 1. Now the same can be replaced in value of sum. तो वहाँ से हमें अल्टीमेटली फाइनली क्या मिल जाएगा कि सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी. s will be nothing but x1 by 3 only. ओके, क्लियर. तो ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है इसको. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The radii of 3 concentric circles are the roots of the polynomial px is equal to 8x cubed minus 52x square plus 94x minus 35. Find the ratio of the area of these 3 circles arranged from the largest to the smallest. Ratio of the area of these 3 circles arranged from the largest to the smallest. हमें given है एक cubic polynomial and px is equal to 8x cubed minus 52x square plus 94x minus 35. This is our cubic polynomial. For any polynomial, a cubic polynomial, if that is equal to px, और अगर उसका coefficient of x cube, leading coefficient is equal to 1, तो we can write x cube minus
sum of the roots into x square plus pair product of pairs, paired product roots, a paired product का sum into x minus product of all the roots. This would be our cubic polynomial. बट यहाँ पे 8 आ रहा है कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट, तो डिवाइड बाई 8, और 8 को कॉमन ले लो, डिवाइड बाई 8 कर दो. इफ यू टेक 8 एज कॉमन, सो दिस कैन बी रिटन एज 8 इंटू एक्स क्यूब माइनस 52 बाई 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 94 बाई 8 इंटू एक्स और माइनस 35 बाई 8. तो नाउ वी कैन से कि प्रोडक्ट रूट्स क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा हमारा 52 बाई 8 विच इज 13 बाई 2 एंड प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 35 अपॉन 8. अब प्रोडक्ट पता लगाना डिफिकल्ट है, 35 बाई 8 का सम आ रहा है 13 बाई 2 का. ठीक है, बट हिट एंड ट्रायल कर सकते हो. कैसे कर सकते हो, बिकॉज प्रोडक्ट हमारा आ रहा है 35 बाई 8. 35 इज बेसिकली 1 इंटू 7 इंटू 5, 7 इंटू 5 है, बट क्योंकि 3 रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे, तो 1 इंटू 7 इंटू 5 बन रहा है, और डिनोमीटर में आ रहा है 8, जबकि सम हमारा है 13 बाई 2. सम में डिनोमीटर में 2 ही आ रहा है. तो कैन दिस बी रिटन एज, प्रोडक्ट कैन बी रिटन एज 1 बाई 2 इंटू 7 बाई 2 इंटू 5 बाई 2. इज दिस पॉसिबल? बिकॉज इफ दिस इज द केस, तो सम क्या आएगा, सम विल बी 1 बाई 2 प्लस 7 बाई 2 प्लस 5 बाई 2, यानी कि 1 प्लस 7 प्लस 5 दैट इज 13. तो यस, दिस इज कमिंग आउट टू बी करेक्ट. 13 बाई 2 आ रहा है. बस एक बार वेरीफाई कर लो कि 95 4 बाई 8 हमारा पेयर्ड प्रोडक्ट्स का सम आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो 1 बाई 2 इंटू 7 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 इंटू 5 बाई 2 प्लस 7 बाई 2 इंटू 5 बाई 2. दिस इज 7 प्लस 5 प्लस 35. 35 प्लस 14, यस दैट इज कमिंग आउट टू बी 94 बाई 8 और 47 बाई 4, क्योंकि यहाँ से हमारा डिवाइडेड 4 आ रहा है डिनोमिनेटर में ना, तो 47 बाई 4 दैट इज सेम एज 94 बाई 8. तो यस, दीज आर द रूट्स 1 बाई 2, 7 बाई 2 एंड 5 बाई 2. अब क्वेश्चन कह रहा है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दीज थ्री सर्कल्स अरेंज फ्रॉम लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट. तो रेडियाई हमारी कितनी आ रही है, 1 बाई 2, 5 बाई 2 एंड 7 बाई 2. दीज आर रेडियाइज. तो रेशियो कितना आ रहा है, रेशियो आ रहा है रेडियस का 1:5:7, एंड हेंस एरियाज का रेशियो आ जाएगा 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर. अच्छा, लिखना हमको है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है हमने, असेंडिंग ऑर्डर में, तो फिर ऑर्डर चेंज कर देना. तो 1:25:49, यानी कि 49:25:1, दैट विल बी आवर आंसर विच इज ऑप्शन बी. क्लियर है? बट ऐसे केसेस में डेफिनेट सी बात है कि हमें जो पैटर्न दिया होगा उस पैटर्न के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा, और ऐसा केस आ चुका है प्रीवियसली के में. तो कैसे सॉल्व करोगे, ये क्लियर हो गया होगा. ठीक है, यहाँ पे और कुछ सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है. क्लियरली एक इंटीजर सॉल्यूशन हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है. ठीक है, किसी केस में ऐसा हो सकता है कि कोई एक इंटीजर सॉल्यूशन वही पॉसिबल है, बट हमेशा पैटर्न कैसे देखोगे, सम को आइडेंटिफाई करो, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करो, एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट कि प्रोडक्ट से हम क्या प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं. दैट विल गिव यू अ हिंट कि हमारे क्या वैल्यूज हो सकते हैं, व्हाट कैन बी द पॉसिबल रूट्स फॉर दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल. ओके, क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Consider a triangle with vertices at A 0,3, B -4,0 and C 4,0. Let O be the circumcenter and H be the orthocenter of this triangle. Find the distance between O and H. What will be distance between orthocenter and circumcenter? Where orthocenter is H and circumcenter is H. Orthocenter is H, circumcenter is O. So first of all, let us make Cartesian plane. So A is equal to 0,3. That is the first point. X is equal to 0, y is equal to 3. So this is, let us say, A, 0,3. And B is equal to -4,0. And C is equal to 4,0. So this is our triangle ABC. Then for this triangle ABC, we need to find out circumcenter and orthocenter of the triangle. And then we can find out the distance between circumcenter and orthocenter. Okay. Now, can you observe the symmetry in this triangle? By distance AB is equal to distance AC. है कि नहीं? डिस्टेंस AB इज इक्वल टू डिस्टेंस AC. तो A पॉइंट हमारा क्या है, 0,3 है. तो फ्रॉम ओरिजिन दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3, दिस डिस्टेंस इज 3 एंड दिस डिस्टेंस इज 4 फॉर पॉइंट C. दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 4 फॉर पॉइंट B, यानी कि AB इज इक्वल टू 5. राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है 3 4 5 वाला. सिमिलरली हियर AC इज ऑल्सो इक्वल टू 5, तो AB इज इक्वल टू AC. So this is the isosceles triangle. And if this is an isosceles triangle, so basically this line here, this is perpendicular on base, or not say perpendicular. If this point is D, so we can say that AD
is perpendicular to BC and AD is also median. Isn't it so? Isosceles triangle में opposite vertices, if AB and AC these are equal, then from point A, if the median is drawn, तो median is perpendicular on base, तो AD, if the AD is median, then that will be perpendicular. If AD is perpendicular, then that will be a median. So AD is also a median. Okay, क्या ये clear है? और वैसे भी दिख ही रहा है ना, मतलब 4 4 इक्वली है, ठीक है. सो इज दैट पार्ट क्लियर? पर हमें चाहिए क्या यहाँ पे? हमें यहाँ पे चाहिए सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर. सो लेट अस अज्यूम कि सर्कम सेंटर कहाँ पे आएगा यहाँ पे? सर्कम सेंटर इज दैट पॉइंट विच इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द 3 वर्टिसेस. यानी कि सर्कम सेंटर मस्ट बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट बी, फ्रॉम पॉइंट सी. सो इफ दैट हैज टू बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल 3 वर्टिसेस, देन डेफिनेटली दैट पॉइंट मस्ट बी लाइंग ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री. यानी कि दैट पॉइंट मस्ट बी लाइंग ऑन द एक्सटेंडेड लाइन एडी. एक्सटेंडेड लाइन एडी पे हमारा सर्कम सेंटर लाई करेगा. So that, let us say, this is where the point lies. This is the point. ठीक है? So in that case, we can say that this distance will be equal same as the distance from A. So if circumcenter is point O, so we can say that OB is equal to OC is equal to OA, which is equal to nothing but circumradius capital R. Or since O is on the line of symmetry on the y-axis, तो x coordinate will be equal to 0. y coordinate को मान लेते हैं हम y1. तो नाउ फाइंड आउट डिस्टेंस. किन्हीं भी दो पॉइंट से ले लो, तो OA एंड OC. OA इक्वल टू OC. OA डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 0 माइनस 0. तो बेसिकली दिस विल बी मॉड ऑफ y1 माइनस 3. भाई पूरा इक्वेशन लिखोगे तो इक्वेशन क्या बनेगा हमारा? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस रूट ऑफ y2 माइनस y1, रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. तो x2 और x1 तो 0 ही 0 है. तो रूट ऑफ y1 minus 3 whole squared, which will be equal to nothing but mod of y1 minus 3. ठीक है, मैं नहीं पता कि y1 और 3 में से कौन सी वैल्यू लार्जर होगा, कौन सा छोटा होगा. हालांकि दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली कि हमारा 3 इज लार्जर देन y1, तो वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज 3 माइनस y1. तो बहरहाल mod of y1 minus 3 दैट विल बी इक्वल टू OC. और OC हमारा क्या होगा? रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, रूट ऑफ 16 प्लस y1 स्क्वायर. दिस इज mod of y1 minus 3. ओके, अगेन एक बार स्क्वायर कर दो, अगेन स्क्वायर इट, तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाए. तो y माइनस 3 स्क्वायर विल बी इक्वल टू y1 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 y1 एंड दैट विल इक्वल 16 प्लस y1 स्क्वायर. तो y1 स्क्वायर विल बी गेटिंग कैंसिल्ड आउट और फिर यहाँ से वैल्यू हमें मिल जाएगा 6 टाइम्स y1 इज इक्वल टू माइनस 7 एंड हेंस y1 विल बी माइनस 7 बाई 6. माइनस 7 बाई 6. ओके, सो वी गॉट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O and that will be 0 comma minus 7 by 6. Similarly, we need orthocenter as well. Now orthocenter is intersection point of all the altitudes. Intersection point of altitudes. So intersection point of altitudes drawn from point A, from point B and from point C. Altitude drawn from point A on the opposite vertices, that is AD only. Isn't it so? So orthocenter must lie on extended line AD. Line AD पे lie करेगा. और अगर लाइन एडी पे ही लाई करेगा, सो दैट ऑल्सो विल बी लाइंग ऑन समवेयर ऑन द वाई एक्सिस ओनली. वाई एक्सिस पे ही कहीं लाई करेगा. ठीक है, सो लेट अस से दैट पॉइंट इज इक्वल टू दिस पॉइंट, दिस इज इक्वल कैपिटल H एंड दोस कोऑर्डिनेट्स आर 0 कॉमा H. ओके, बिकॉज एडी को एक्सटेंड करोगे तो अल्टीमेटली ये यहाँ पहुंचेगा. एंड देन लेट अस से फ्रॉम पॉइंट बी अल्टीट्यूड इज ड्रॉन, तो दैट विल बी, this is the altitude and this is perpendicular to line AC at point H. Okay, so BH will be perpendicular to AC and coordinates of H are 0 comma H. अब कैसे फाइंड आउट करेंगे कि H के कोऑर्डिनेट्स हमारे 0 कॉमा H है और BH हमारा परपेंडिकुलर AC होगा. हमें पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स पता है -4,0, हमें पॉइंट A पता है 0,3, पॉइंट C पता है 4,0, तो वी कैन फाइंड आउट स्लोप ऑफ लाइन AC which will be 3 minus 0 upon 0 minus 4 which is equal to minus 3 by 4. Slope of line AC में पता लग गया, that is equal to minus 3 upon 4. Now since BH and AC are perpendicular, तो their slopes यानी कि slope of BH multiplied by slope of AC that must be equal to -1. और क्योंकि slope of AC पता है -3 by 4, तो यहाँ से slope of BH भी पता लग जाएगा. तो BH
का slope minus 3/4 into minus 3/4, that is equal to minus 1. Minus minus gets cancelled out. Slope of BH must be equal to 4/3. This must be equal to 4/3. Now slope of BH क्या होगा? BH h minus 0 upon 0 minus minus 4. H by 4 is equal to 4/3, and hence h will be equal to 16/3. So now we got coordinates of point h as well. So that will be 0, 16/3. So difference मिल जाएगा हमको, because both are lying on y-axis only. So OH distance will be equal to difference between the y coordinates. Okay, x coordinates तो 0 ही है, तो 16/3 minus 7/6. So 16/3 plus 7/6. So that is 32/3 plus 7/6, 39/6. Which will be 13/2, which is equal to 6.5 units. Option C आंसर हो जाएगा. क्या ये पार्ट क्लियर? ऑप्शन सी हमारा विल बी द आंसर. ओके, नाउ दिस इज वन ऑफ द वेज टू लुक एट दिस क्वेश्चन, जहां पे हमने प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज करके ही इस क्वेश्चन को सॉल्व किया. बट अदरवाइज ऑल्सो दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इन मच सिंपलर मैनर. कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो और आसान तरीके से देखो. इफ यू कैन रिकॉल, आई हैव ऑल्सो डिस्कस दिस इन वन ऑफ द सेशंस, दैट ऑलवेज रिमेंबर द रिलेशन बिटवीन ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर यूजिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, याद रहे तो बेस्ट है, बट अदरवाइज remember this using a right angle triangle. So in the right angle triangle, circumcenter is the middle point of the hypotenuse, midpoint of the hypotenuse. Okay, that is our circumcenter. So if this is right angle triangle ABC and this point is D, AD is equal to CD is equal to BD, and these are circumradius, capital R. Okay, and since D is the midpoint of AC, hypotenuse का midpoint है, तो clearly BD is median. ठीक है, BD मीडियन है, परपेंडिकुलर नहीं है, ध्यान रखना. BD is median. So if BD is median, then there will be a point on BD. Let us say that point is a point O. So that point O will be, O की वजह G लिख देते हैं, G that is centroid, और D की वजह इसको O लिख देते हैं because that is circumcenter, ताकि nomenclature सिंपल रहे. तो BO is median and point G on BO such that point G divides BO in the ratio 2:1. और point B क्या है? From point B, AB is perpendicular on BC, AB is perpendicular on BC, and similarly CB is perpendicular on AB. So point B is nothing but this is orthocenter. ठीक है. So effectively in any triangle, not just in right angle triangle, but in any triangle, if we have H that is orthocenter and O that is circumcenter, then we have G that is dividing, that lies in the straight line. Orthocenter, centroid and circumcenter lie in a straight line, and centroid divides the line connecting orthocenter and circumcenter in the ratio 2:1. So this is the basic property. अब इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. कैसे करते हैं कि देयर इज अ ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल A B C with sides this is equal to 5, AB is equal to 5, AC is equal to 5, and BC is equal to 8. Now we have drawn perpendicular from A on BC, that is dividing it in two parts, 4 and 4. ठीक है. अब यहाँ पे सेंट्रॉइड तो हमें मिल जाएगा इजीली. सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा? बिकॉज दिस लेंथ इज इक्वल टू 3. तो सेंट्रॉइड विल बी, दिस इज मीडियन ओनली, AD is median only, so centroid will be dividing this in the ratio 2:1. Okay, so this distance here, this will be equal to 1, and this here will be equal to 2, and this point here will be centroid. अब किसी भी एक पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लो. लेट अस से हम निकाल लेते हैं अपना सर्कमसेंटर. विल बी लाइंग ऑन दिस लाइन ओनली. लेट अस से दिस पॉइंट इज आवर सर्कमसेंटर O. So OA will be equal to OC, and that is equal to R. अब OC को इक्वल टू R मान लिया. OA क्या होगा? OA भी R होगा. ठीक है, बट R तो हमें पता नहीं है ना. हमें क्या पता है? We know this value, this is equal to 4. We can assume that, let us say this is equal to X, this is equal to X. So in that case, if that is X, तो 4 square plus X square. In this triangle ODC, R square will be equal to 4 square plus X square. Isn't it so? Similarly, OA is equal to R.
So can we say that AD is equal to R minus X? And that is equal to 3. इससे क्या सॉल्व होगा? एक सेकंड. O is equal to OC is equal to R. We have to find out R. ठीक है. This is equal to 4. And here this is equal to R. X कैसे निकलेगा? ये तो ठीक है. R square is equal to 4 square plus X square. Fine. And here AD is equal to R minus X. That is also correct. अच्छा, कैपिटल R is equal to 3 plus X. ये लिखना चाहिए था ना. कैपिटल R is equal to 3 plus X. हाँ. So R is equal to 3 plus X. AO is equal to 3 plus X. ठीक है. So R is equal to 3 plus X पुट कर दो इस इक्वेशन में. So 3 plus X whole squared. This is equal to 4 square plus X square. लेकिन 9 plus X square plus 6X is equal to 16 plus X square. X square कैंसिल आउट हो जाएगा तो 6X will be equal to 7. X is equal to 7 by 6 आ जाएगा. Now we got X is equal to 7 by 6. Okay. जैसे X equal to 7 by 6 मिल गया. So now we know कि this is our centroid G. तो GO डिस्टेंस निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? Now GO will be equal to X plus 1. 13 by 6 हो गया. And we know कि if GO is equal to 13 by 6, HG will be 2 times of that. 2 into 13 by 6. Total distance HO will be equal to 3 times 13 by 6. That is 39 by 6. यानी कि 6.5 units. Answer will be option C. Okay. Is that part clear? So these are all the questions in this session. I believe जो भी क्वेश्चन हमने जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया वो सारे के सारे समझ में आएंगे. And that's all for this session. Bye bye. Take care. इतना ही रखते हैं सेशन में. And that's all for this session. Bye bye. Take care and best of luck for the exam.